all to Hans Commerce Tutorial online classes. Today in this session we are going to discuss the cost of capital. We are discussing in last few sessions the third unit of financing decisions, from where to procure the funds. So in this financing decisions we have already covered the leverage and capital structure. Now the third part is cost of capital. See here, it is the responsibility of the finance manager to make a proper combination of different sources of funds. The long-term finance can be raised through different ways, through different sources. The important sources of long-term finance are equity shares, preference shares, debentures, and every source there is a cost involved. बिजनेस को जहां से भी पैसा आता फ्री में नहीं आता, उसके ऊपर कॉस्ट लगता है. Example, when the business has taken a loan from bank, the business has to pay interest. अगर डिबेंचर्स पब्लिक में इश्यू करके डिबेंचर्स से पैसा रेज करें, the company has to pay interest on debentures. Similarly, when the company issues preference shares, the company has to pay preference dividend. Equity shares, equity dividend. So equity dividend, preference dividend, interest, all these are called cost of capital. And the cost of capital is very much required for number of decisions taken by finance manager. So in this unit, we are going to discuss how to compute the cost of capital. And one thing you remember, the cost of capital is not same for every source. For cost of debt, the cost of debt is the stipulated or agreed rate of interest, contractual rate of interest between the company and the lenders. So the company has to pay the contractual specified rate of interest periodically to the supplier of debts. Similarly, on preference there is a stipulated rate of dividend. On preference share there is a stipulated rate of dividend which must be paid. But this must be paid only after paying the interest on debentures, but before making any payment to equity shareholders. Similarly, on equity shares, dividend must be paid. There is no contractual obligation to pay equity dividend. But if the company does not pay equity dividend, then the shareholders will get dissatisfied. The shareholders will start selling the shares. The market price will come down. So it will put a negative impact on the company. So indirectly it is compulsory to pay the dividend to equity shareholders also. So these are called the cost of capital. Means interest on debentures, dividend to preference shareholders, dividend to equity shareholders. This is the meaning of term cost of capital. Now secondly, we will discuss about the importance of cost of capital. Overall cost of capital. Two types of cost is there: specific cost of capital and overall cost of capital. Specific cost of capital means individually we are calculating for every source. When we combine all the different sources, we'll get the average cost of capital. That we call it as overall cost of capital. So what is the importance? Why there is a need to calculate the cost of capital? See here, while taking a number of financial decisions, particularly capital budgeting decisions, the finance manager, while evaluating a capital budgeting proposal, he has to take a required rate of return. That required rate of return is the cost of capital. So future benefits, they will discount at the required rate of return, and that required rate of return normally is the overall cost of capital. तो अगर overall cost of capital नहीं मालूम करेंगे तो it will be difficult to evaluate a capital budgeting proposal. This shows the importance. Apart from that, the financial performance will be evaluated. The financial performance will be evaluated. That's why this overall cost of capital will be called as cutoff rate or required rate of return or target rate. With the help of this, we can be able to evaluate the performance of different departments. For intercompany, intra-company performance comparison, again this cost of capital will be used. Apart from that, there is a relationship between cost of capital and the value of the firm. So normally a firm's value will be calculated with the help of cost of capital. So there are innumerable instances which shows the importance of cost of capital. Next we discuss about computational procedure.
A business firm can raise the funds through equity shares or preference shares or debentures. So every source of fund will have a cost which is different. The same cost will not be applied. It depends on the risk attached. From the company's point of view, this debentures will have some advantages as well as disadvantages. The advantage is the cost paid on debentures or debt is comparatively lower, because the debenture holders are not taking the risk. The debenture holders are not taking the risk. They are definitely going to get the interest whether the company earns profit or incurs loss. So when they are not taking interest, the return should be less. So this, and one more thing is there, it is tax deductible expenditure. Interest on debt is a tax deductible expenditure. So the firm is getting tax shield. The effective rate of interest on debt will be lower than the actual rate of interest. Similarly, dividend paid on equity or dividend paid on preference normally is a costly source, because the dividend paid will not be allowed as deduction while computing taxable income. So in case of cost of debt, we have to find out what is the cost of debt after tax effect, right? So computational procedure, we have to compute separately. We have to compute separately the specific cost of each source, like specific cost of equity, that is KE, specific cost of preference, KP, cost of debt, KD, and cost of retained earnings, KR. Now we'll come to the measurement of cost of capital. How to compute the cost of capital? So there are some formulas, there are some techniques, there is a method to calculate the cost of each source of funds. To measure the cost of capital, we have classified into 4 categories. Cost of debt, cost of preference, cost of equity, cost of retained earnings. Simply KD, KP, KE, KR. These symbols will make use to denote the cost of debt. First of all, KD. The cost of debt, the cost of debentures. It is the easiest method. The easiest method is to calculate KD. Not much complication, because the rate of interest is a stipulated contractual rate. At the time of issue of debentures itself, the company will declare what is the rate of interest payable on debentures. तो कंपनी जब डिबेंचर्स इश्यू करती है तभी उसके ऊपर स्पेसिफाई कर देती है कि ये डिबेंचर्स के ऊपर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, स्पेसिफाई कर देते हैं, और स्पेसिफाई करने के बाद जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं दैट विल बी अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम. So we are getting tax benefit by paying interest charges. The effective rate of interest will be comparatively lower. And to calculate cost of debt, only thing is we need 2 items. The 2 items are, what are the cash inflows at the time of issuing the debentures. Debentures issue करने के टाइम पे cash inflow कितना मिल रहा, फिर every year how much fixed interest charges we have to pay, and how much principal amount is to be repaid on maturity. So by using these inflows and outflows, we can be able to calculate the cost of debt. So comparatively, compared to other cost of debt is very easy to calculate, because the rate of interest is already specified at the time of raising the debt. Second, cost of preference capital. So comparatively, cost of preference capital is a little bit costlier compared to cost of debt, because the preference shareholders are taking some risk. The preference shareholders will be paid dividend only after paying interest on debt. Interest on debenture पे करने के बाद ये लोग को मिलेगा. तो preference shareholders को भी कब मिलेगा? When there is profit in the company. कंपनी में प्रॉफिट रहा तो डिविडेंड मिलेगा. But they are getting the dividend before making any payment to equity shareholders. इक्विटी शेयरहोल्डर्स को पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को पे करना पड़ेगा. तो कंपैरेटिवली द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स विल बी हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट, बट द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस विल बी लोअर देन द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी. रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी, क्योंकि सब में कॉस्टलीस्ट जो है तो वो इक्विटी होता है. नाउ विल कम टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. The cost of equity, KE, is the costliest source of finance.
क्योंकि इसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड नॉर्मली ज्यादा रहता। तो क्यों ज्यादा रहता? बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क टेकर्स, दे आर द रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ अर्निंग्स। सबको पे करने के बाद इक्विटी शेयर डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, सब एक्सपेंडिचर पे करने के बाद अगर प्रॉफिट रहा तो it will be paid in the form of equity dividend. Otherwise, equity shareholders will not get any dividend. When they are taking the highest risk, they should be paid the highest return. So normally, the rate of equity will be higher compared to all. Now, lastly, cost of retained earnings. Retained earnings are the reserves. A part of the profit which is not distributed among shareholders but kept in reserves. It is called retained earning. It's a self source of financing or internal source of financing. जब कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए कंपनी को, तो कंपनी को दो सोर्सेस है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से पैसा रेज करना बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब अपना पैसा, कंपनी के पास जो पैसा रखा हुआ है वही पैसा यूज कर। वो पैसा कौन सा है? रिटेन अर्निंग्स। तो नॉर्मली देयर इज नो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तब होगा जब एक्सटर्नल सोर्स बाहर से पैसा रेज करे तो कॉस्ट लगेगा। जब हमारा पैसा खुद का पैसा अगर यूज करेंगे तो नेचुरली देयर इज नो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नो इंटरेस्ट इज पेड, नो डिविडेंड इज पेड ऑन रिटेन अर्निंग्स। बट this logic is not accepted. The correct logic is there is a cost on retained earnings. Actually, retained earnings was formed by not paying the dividend to shareholders. The shareholders have foregone the dividend. वो shareholders को dividend नहीं देकर retained earnings बनाए, तो कितना shareholders कितना earn कर सकते थे? The opportunity cost. Had this profit been distributed in the form of dividend to shareholders, the shareholders might have earned some return on their investment. But due to not declaring the dividend, they are foregoing the dividend. So how much interest they would have earned had that profit be distributed among them? अगर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो शेयर होल्डर्स कितना प्रॉफिट अर्न करते थे, कितना रिटर्न अर्न करते थे ये डिविडेंड के ऊपर। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इट इज नॉट द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज नॉट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, it is an opportunity cost to be calculated on retained earning also. So we have to calculate the cost on external fund and also for internal fund. The internal fund is retained earning. बाहर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर बाहर से रेज करते तो कितना होता था, वो हिसाब से रिटेन अर्निंग का भी कॉस्ट मालूम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये चारों कॉस्ट में सब में कॉम्प्लिकेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्विटी कैपिटल। द रीजन इज द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी इज नॉट फिक्स्ड। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी इज नॉट फिक्स्ड। इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, investment opportunities available with the company, the discretion of the board of directors, the liquidity position of the company, ये सारी चीजों के ऊपर इक्विटी डिविडेंड डिपेंड है। तो श्योर नहीं है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को नहीं मालूम कि कितना डिविडेंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, दे आर नॉट श्योर। सो सब में कॉम्प्लिकेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू बी कैलकुलेटेड इज इक्विटी शेयर कैपिटल। Now how to calculate the cost of equity capital? Different approaches are available. Broadly, we divide the approaches into 4 categories. They are dividend price approach, second earning price approach, third dividend price plus growth approach, dividend price plus growth approach, last realized yield approach. First of all, dividend price approach, इसको DP approach कहते हैं। The first approach to find out the cost of equity KE is DP approach. So according to this approach, dividend is what the return get by the shareholders. Shareholders को जो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिलता वो डिविडेंड ही मिलता। तो shareholders are focused on the returns. They are not concerned with any other factor. They want only returns in the form of dividend. So we calculate the cost of equity by a ratio of dividend to price. For example, the market price of share is 120 and the dividend declared by the company is 12 rupees. एक शेयर के ऊपर कंपनी 12 रुपए डिविडेंड पे करना।
और मार्केट में एक शेयर का प्राइस 120 रुपीज है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 12 रुपीज डिविडेंड डिवाइडेड बाय 120 रुपीज मार्केट प्राइस इनटू 100, 10%. 10% is the cost of equity. So simply to calculate KE, we need dividend, we need the market price. D stands for dividend, P stands for market price into 100. This is called dividend price approach. Some other people says dividend is not the only return which the shareholders will get. Apart from dividend, the reserves also belongs to shareholders only. तो डिविडेंड प्लस रिजर्व्स दोनों को मिला लिया तो अर्निंग्स कहते हैं, ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर. कंपनी एक शेयर के ऊपर अर्निंग सपोज 20 रुपीज है, तो कंपनी विल नॉट डिक्लेयर ऑल 20 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस नहीं होता. ईपीएस अगर 20 रुपीज है तो 20 रुपीज का पार्ट सपोज 12 रुपीज विल बी डिक्लेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. तो ईपीएस 20 रुपीज, डीपीएस 12 रुपीज, बाकी के 8 रुपये रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग्स. So some people says the shareholders will not emphasize only on dividend, they will emphasize the total earnings. Shareholders ये कहते हैं कि एक शेयर के ऊपर कितना अर्न कर रहा है ये देखना है, कितना डिविडेंड पे कर रहा है ये नहीं देखना. क्योंकि कंपनी जो रिटर्न अर्निंग भी रखी है तो वो रिटर्न अर्निंग किसका पैसा है? वो शेयरहोल्डर्स का पैसा है. शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड नहीं देकर रिटर्न अर्निंग रखे हुए हैं, तो एक्चुअली उसके ऊपर राइट जो रहता है रिटर्न अर्निंग के ऊपर, राइट शेयरहोल्डर्स का है, शेयरहोल्डर्स का है. तो सम पीपल विल आर्ग्यू दैट वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी नॉट अकॉर्डिंग टू डिविडेंड बट अकॉर्डिंग टू अर्निंग्स. तो द फॉर्मूला विल बी ईपी अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच. सो अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100. दिस विल गिव यू के according to earning price approach. One more approach is dividend price plus growth approach. Some people says dividend is not the only return which the shareholders will get, but apart from that there is a growth in dividend. जैसा जैसा कंपनी चलती है, ग्रोथ होता है कंपनी का, तो कंपनी के ग्रोथ को भी उसका रिटर्न जो है शेयरहोल्डर्स को मिलना चाहिए. तो डीपी अप्रोच में एक ऐड कर दिया फैक्टर को, ग्रोथ फैक्टर. For example, the company is getting a dividend, paying a dividend of rupees 10. 10 रुपए डिविडेंड पे कर रहे हैं, 100 रुपए मार्केट प्राइस है, 100 रुपीज इज द मार्केट प्राइस. तो 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 10%. डीपी अप्रोच के हिसाब से 10%. लेकिन देयर इज अ ग्रोथ इन द डिविडेंड ऑफ द कंपनी. कंपनी के अर्निंग्स में, कंपनी के डिविडेंड में 10% ग्रोथ है, 10% ग्रोथ है. तो डीपी अप्रोच के हिसाब से 10% ग्रोथ, 10%, तो टोटल के विल बी 20%. सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड डीपी प्लस जी. तो डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच. देन लास्ट वन इज रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच. अभी तक जो ऊपर के 3 अप्रोचेस है, डिविडेंड प्राइस, अर्निंग प्राइस और डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, all these are expected dividend, expected earnings and expected growth. And expectation means it is related with future, and future is uncertain. Future is completely uncertain. हम expect कर रहे हैं ये dividend मिलेगा, ये earning होगी, ये growth होगा, लेकिन ये सब uncertain है because it is related with future. तो realized yield approach, the people who support this realized yield approach says instead of calculating the future dividend, future earnings, we take the dividend of the past, the earnings of the past. तो previous years में कितना dividend था, कितना earnings था, वो basis के ऊपर KE calculate करेंगे. तो we calculate the KE not according to expectation of the future. We calculate the KE according to the past, dividend, past earnings. That is called realized yield approach. So these are the different approaches of calculating the cost of equity, KE. The next topic is regarding the weighted average cost of capital. See, the cost of capital have 2 different methods. The first is we have to calculate specific cost. पहला काम कंपनी का specific cost मालूम करना, KD, KP, KE, KR, इंडिविजुअली अलग अलग मालूम कर लेना. जब चारों अलग मालूम हो गए तो अब इसका एवरेज निकालना.
तो एवरेज निकालने के लिए टू एवरेजेस आर देयर, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज का मतलब जस्ट यू एड अप ऑल द एवरेजेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सोर्सेस। एग्जांपल, 4 सोर्स है, KE, KP, KD, KR। ये चारों के जो रेट्स है, स्पेसिफिक कॉस्ट है, चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दो, तो ये सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज करेक्ट है प्रोवाइडेड all the sources, the amount of all the sources must be same। अगर चारों सोर्सेस का अमाउंट सेम है, यानी 10 लाख रुपीस इक्विटी, 10 लाख रुपीस प्रेफरेंस, 10 लाख रुपीस डिबेंचर, 10 लाख रुपीस अगर रिटेल अर्निंग, पूरे 10 लाख रुपीस है, तो फिर सिंपल एवरेज करेक्ट। या पूरे 5 लाख रुपए है, यानी पूरे सोर्सेस में अमाउंट सेम रहना, अगर सेम है तो सिंपल एवरेज इज करेक्ट। बट इट सेल्डम हैपेंस इन रियल प्रैक्टिस। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं रहती है जहां पर पूरे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस सेम रहे, सब अलग अलग रहता, डिफरेंट रहता। जब अमाउंट्स डिफरेंट है तो सिंपल एवरेज विल नॉट सर्व द पर्पस, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव, इट इज नॉट करेक्ट। देन क्या करना पड़ेगा उसको? वेटेड एवरेज। द वेट्स हियर आर द proportion of each source of funds, the proportion of each source of funds. So we take, these are weights. Now we multiply specific cost with the proportion or weight to get weighted average cost of capital. This weighted average cost of capital is also called overall cost of capital or combined cost of capital or composite cost of capital. Different names are given. इसको KO बोलते हैं. The weighted average cost of capital is called KO, overall cost of capital. And this overall cost of capital will be taken as the required rate of return or cut-off rate or hurdle rate. So while doing the problems, we come across two types of problems. Starting few problems we'll do on calculating specific cost, calculating each individual specific cost. After that, we calculate the overall cost of capital, combined cost of capital. Then marginal cost of capital. The cost of capital which is calculated for intended finances. That means not the present finance, future finance. Company future में funds raise करना चाह रही है. The company requires a total 50 lakh rupees funds, long term funds. 50 लाख रुपए चाहिए. अब ये 50 लाख रुपए कैसा रेज करेंगे फ्यूचर में? द कंपनी इज कैलकुलेटिंग आउट ऑफ 50 लाख 20 लाख विल रेज थ्रू इक्विटी, 10 लाख वी रेज थ्रू डिबेंचर्स, 20 लाख वी रेज थ्रू प्रेफरेंस. तो कंपनी प्रोपोर्शन बता दिया कि 50 लाख रुपए में कितना कितना सोर्स कहां से रेज करेंगे. तो अब जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मालूम करेंगे, यहां पर मार्जिनल वेट्स, द वेट्स व्हिच वी आर इंटेंडिंग फॉर फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो two types of WSCC, existing WSCC and marginal WSCC. Existing WSCC का मतलब at present जो हमारे पास है उसका WSCC मालूम करें, और marginal cost का मतलब फ्यूचर में जो हमको फंड चाहिए वो फंड का WSCC कैसा कैलकुलेट करें. This is the marginal cost of capital. अभी जो डिस्कस किए हैं ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है. We have to apply the formula. So now briefly we'll discuss what are the formulas applied to calculate the specific cost. Specific cost के लिए formula for calculating cost of capital. Specific cost. First cost of debt, KD. KD मालूम करने के दो मेथड्स हैं, एक irredeemable, एक redeemable. Irredeemable का मतलब कंपनी जो वापस नहीं लेगी. The company has not given a time when the company will return back the debt. Debt को कब वापस करेंगे वो टाइम पीरियड नहीं दिया. इसका बेस्ट एग्जांपल है डिबेंचर्स. डिबेंचर्स में कंपनी ये नहीं दिया कि these debentures will be redeemed after 15 years, 20 years like that. No specific condition was given. Simply company has issued the debentures. It is called irredeemable. अगर irredeemable debt है तो KD after tax will be calculated I divide by NP into 1 minus T into 100. अब प्रॉब्लम करते हैं और डिटेल में देखेंगे. I stands for interest on debentures. NP stands for net proceeds on issue. नेट प्रोसीड्स ऑन इश्यू. जब डिबेंचर्स इश्यू करे तो वो टाइम पे कितना पैसा आया. अब फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इश्यू करे तो डोंट थिंक दैट कंपनी विल गेट 10 लाख रुपीस. 10 लाख रुपीस से ज्यादा भी आ सकता, 10 लाख रुपीस से कम भी आ सकता. कैसा आता? देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इश्यूइंग द सिक्योरिटीज: पार वैल्यू, डिस्काउंट, प्रीमियम.
पार वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू। 10 लाख रुपए के डिबेंचर से 10 लाख रुपए में इश्यू कर दिए, पार वैल्यू। डिस्काउंट पे 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, 9 लाख रुपए में इश्यू कर दिए, ये डिस्काउंट। 10 लाख रुपए का डिबेंचर है, 11 लाख रुपए में इश्यू करे, प्रीमियम पर है। और जब इश्यू करते हैं तो इश्यू करने के बाद फ्लोटेशन कॉस्ट भी होता है। विदाउट इनकरिंग फ्लोटेशन कॉस्ट, रेजिंग कॉस्ट, वी विल नॉट गेट। अब कंपनी डिबेंचर इश्यू करना चाह रही है, इश्यू करने से पहले एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिसिटी करना, फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना, ये सारे लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना, फिर मार्केटिंग करना, ये सारी चीजों का खर्चा हो रहा। 10 लाख रुपए कंपनी रेज करना चाह रही तो 1-2 लाख रुपए उसका कंपनी का एक्सपेंडिचर हो, तो कंपनी को आ रही सिर्फ 8 लाख रुपए। इश्यू करे डिबेंचर्स 10 लाख रुपए, लेकिन कंपनी को मिला 8 लाख रुपए, क्यों? 2 लाख रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। ये सारी चीजों को एडजस्ट करके हम नेट प्रोसीड्स फाइंड करेंगे। T stands for tax rate, which will be given in the problem. Redeemable का मतलब कंपनी अगर टाइम पीरियड दे दिया, these debentures will be redeemed after 10 years, after 8 years. तो अगर ये टाइम पीरियड दे दिया तो redeemable. अब ये टाइम पे KD after tax is equal to I plus P minus NP by N divided by P plus NP by 2 into 1 minus T into 100. तो प्रॉब्लम में देखना कि irredeemable है या redeemable. Irredeemable है तो ये फॉर्मूला, redeemable अगर है तो ये फॉर्मूला। Now प्रॉब्लम करते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ऑल दिस थिंग्स। देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, केपी। अब प्रेफरेंस शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो डीपी बाय एनपी इनटू 100। डीपी स्टैंड्स फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड, एनपी स्टैंड्स फॉर नेट प्रोसीड्स ऑन इश्यू। नेक्स्ट वी हैव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल टाइम पीरियड अगर दे देगा तो फिर फॉर्मूला सिमिलर है, जो डिबेंचर्स का फॉर्मूला, डेट का फॉर्मूला डिबेंचर्स का था और प्रेफरेंस का सेम फॉर्मूला। फर्क यह है, यहां पर आई था इंटरेस्ट, यहां पर डीपी है प्रेफरेंस डिविडेंड। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिपेंड ऑन द अप्रोचेस, अप्रोच के ऊपर डिपेंड करेगी। डीपी अप्रोच अगर फॉलो करेंगे तो K इज इक्वल टू डी बाई पी इंटू 100। ईपी अप्रोच K इज इक्वल टू ई बाई पी इंटू 100। डीपी प्लस जी अप्रोच डी बाई पी इंटू 100 प्लस जी। ये तीन अप्रोचेस है। नाउ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, KR. The cost of retained earnings is entirely different because it is internal source. There is implicit cost, not explicit cost, not out of pocket cost. KD, KP, KE ये तीनों आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, कंपनी को पे करना पड़ता बाहर वालों को, लेकिन रिटेन अर्निंग्स के ऊपर बाहर वालों को कोई नहीं पे कर रहा है, ये तो इंटरनल सोर्स अपना कंपनी का खुद पैसा है, तो नॉर्मली इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं होता। लेकिन लॉजिकली ये पैसा इक्विटी शेयरहोल्डर्स का है, अगर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को देते तो वो लोग कुछ अर्न कर सकते थे, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मालूम करेंगे। दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कैसा मालूम करेंगे? अगर प्रॉब्लम में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया इक्विटी के ऊपर, if there is no flotation cost given on equity, then we take KE and KR both are same. कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दोनों को सेम लेंगे। कब लेंगे? जब फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं रहा। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट रह गया तो फिर अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा KR को। इफ द फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन सेपरेटली वी हैव टू कैलकुलेट द KR by using the same formula as K, by using the same formula as KE but ignoring flotation cost. फ्लोटेशन कॉस्ट को इग्नोर करके KR मालूम करना, राइट? सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरी रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्मूले। तो टू इन ब्रीफ आई विल डिस्कस लाइक दिस। टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, calculating the specific cost and calculate the overall cost of capital. Specific cost consists of KP, KD, KE, KR. अलग अलग मालूम कर लेना। एक बार अलग मालूम हो गया तो ये चारों को कंबाइन करके एक एवरेज मालूम करेंगे, उसको WACC बोलेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कट ऑफ रेट और हर्डल रेट or target rate. So cost of capital concept is very important for finance manager because a number of financial decisions will be taken on the basis of this cost of capital. So very important topic, tool in the hands of finance manager. That's it. So this is the theory regarding cost of capital.
In the next session, we'll start the problems on cost of capital. Okay.